All right, so hello everyone. I hope I am audible to every one of you. Just give me a moment. All right, great. So let us analyze the Bank Nifty first for the day. I hope my screen is clearly visible to all. So as we come on the 1 hour time frame, so as you can see, okay, after 4th of Feb, it was in a lower wedge pattern. Okay, utna deep we will not go into the patterns and stuff, but it was forming a lower wedge pattern. Let me know if the voice is not right or anything needs to be changed. So there was a lower wedge pattern forming, and that broke today after multiple days after staying in that thing. ठीक है, 49,000 को break करने के लिए obviously we needed a strong candle, and that happened in the very first hour of the day. अब उसके बाद में it stayed pretty much in the sideways direction only, and it wasn't able to break the 49,500 mark. ठीक है, अब if we draw a parallel channel right here simply, ठीक है, एक simply एक parallel channel ले लेते हैं यहाँ पे. So if any of these levels break, then accordingly we will trade. Obviously this is the supply zone, so let's leave that. So it is kind of a forming a pole and flag pattern. Now in the pole and flag pattern, technically the stock should go in the upward direction. Okay, technically this should happen, but let's see what are the other factors that might affect this. Now let's us first analyze what the Nifty as well. Nifty को भी अभी थोड़ा देखते हैं, analyze करते हैं हम लोग. All right. So coming to the topic of Nifty. So Nifty also was very much in the bearish mark only. Nifty ज़्यादा bearish था as compared to Bank Nifty, if I would say. From the same timeline, if you will see, then Nifty was more bearish. ठीक है, let's draw it something like this, a rough figure. तो ये कुछ इस टाइप का पैटर्न था इसका. Now it is struggling to break 23,000. Bank Nifty was fairly positive, agreed, but Nifty is still struggling to break this much of the mark. All right. Now if Nifty manages to break 23,000 level, then you can see there is a very strong OI on every 100 mark above that. So it is quite not possible for it to like sustain for much longer. ज़्यादा समय के लिए उसके लिए sustain करना थोड़ा मुश्किल है. But it is of current expiry and the current expiry is tomorrow. So accordingly, ठीक है, कल के हिसाब से what I am expecting that it will not break 23,000 and it will stay between 22,800 to 23,000 levels. So this is what I am expecting currently. All right, कि निफ्टी इससे इस लेवल के बीच में ही आपका कल रहेगा अगर if we see any move, because it can even come to retest this point. Now let's check on the even lower time frame. अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके चेक करें, सो निफ्टी स्टेड इन अ स्ट्रिक्ट पैरेलल चैनल, बहुत ही स्ट्रिक्ट पैरेलल चैनल फॉर्म कर रहा था ये. नाउ इफ दिस ब्रेक्स, ये ब्रेक करता है, दैट मीन्स इट इज़ ब्रेकिंग द 22,900 मार्क. 22,900 मार्क के ब्रेक करने के बाद येस वी कैन एक्सपेक्ट 22,800 एंड इवन फर्दर इट माइट इवन कम टू रीटेस्ट दिस मार्क. हो सकता है इस मार्क को रीटेस्ट करना है, but because Bank Nifty is quite bullish currently, so we can expect that yes, it can go even higher and so on. ठीक है, this was the Nifty and Bank Nifty analysis. All right, Nifty analysis अगर देखें as this point, ठीक है, this is another point of view for Nifty analysis that we did in the 15-minute time frame, and that was from 14th Feb to this. And this has a similar time frame, so it was going like this. ये ऐसे जा रहा था, it is respecting both resistance and support as well. दोनों ही resistance and support को ये आराम से respect करते हुए, अच्छे से respect करते हुए it was going. ठीक है. Now apart from that, Bank Nifty was fairly bullish as we can see. I'll just extend this for you. Energy sector performed well. Apart from that, media
media sector was really doing well, and in media as well there was Z Media, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा जिसने, it was nearly 7% up, ठीक है, 7% up. I didn't know the reason, what the reason actually was, but it was 7% up from right from the opening, ठीक है, जहाँ से ये ओपन हुआ उसके बाद से ही it was nearly 7% up. Sorry, I did the wrong thing, just a second. Yeah, so nearly 7% up I saw it. So media was pretty much in the good direction, okay, throughout the time. It was doing fairly good, and some of the other stocks as well, if you will see कि यहाँ पे there was infra, there was PSU banks, we know that did well, reality also did well, reality stocks, and Nifty private banks also performed pretty much well in this case, right? Now let's us analyze के जो CNX auto है, that means Nifty auto, it was fairly in the sideways movement as you can see. Energy performed quite well. Energy में let's see कि there are few of the stocks like energy में there is IEX, Genius Power as you can see is one of the parts, so it is it was 7% up. IEX was also 3% up. Infibeam, it is not an energy stock, but yet it was 10% up. So most of the stocks that were performing well, ये wind भी, and after a really long while, काफ़ी ज़्यादा समय के बाद IREDA, IRCTC and RFC, that means railway stocks also start to perform well after a fairly very long bearish move. काफ़ी लंबे bearish move के बाद now they are turning into the positive mark. Okay, ignore those lines, I'll just delete them. No, just drawings. ठीक है. If we will see the bigger picture, अगर बड़े picture पे आए तो आप देखो कि what about IREDA stock? Buying price is at 460. Okay, I'll just analyze that. Now see in this कि अगर इसकी बात करें, it was in a bearish mode from 15th of July 2024. It's still in bearish move only. Long term में ये bearish ही है. Currently change in trend नहीं हुआ है. If you will come on a shorter time frame, that means let's take a 4-hour time frame for an instance. That means it's still in the bearish move after getting a correction from resistance from this point. So here it is. Now it is testing here. Now it might go till 183 or some mark near this. And if it is bullish enough, because ना इस बार क्या हुआ है budget में, that people are not much interested in कि there wasn't much of a notice or significant investment towards the railway sector for this time, जो कि पिछले 2 साल से काफ़ी ज़्यादा था. इस वजह से रेलवे स्टॉक्स उतना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इवन आफ्टर फेब्रवरी उतना उनका परफॉर्मेंस नहीं हुआ है. सो लेट्स सी ITC बाइंग प्राइस एट that mark. Yeah, you bought at the right price, not an issue about that. You can see that it did fairly well. We'll just check क्योंकि यहाँ पे estimates इसके low आ रहे हैं, that it didn't perform as per the expectations. Okay, just so we will just check out the quarterly results of ITC. I don't know when exactly it did come out, but we'll just check out the data of ITC. It was fairly, and you bought at the very top price, that is 460. All right, not an issue. We'll check. It's a good stock. It's a fundamentally good stock, so you don't need to worry about it. It will surely come back and bounce back and give a profitable return in the near future. ठीक है, ये अच्छा आपको profit देगा. But we'll just check out के what went wrong with it. ठीक है. So profits decreased. The operating profit decreased. The sales were also lower, as you can see, and it is significantly lower. There is a more than 1,000 crore difference in the sales. वो इसलिए क्योंकि you can see after June 2022 it was constantly increasing. ठीक है, sales were constantly increasing after June 2022, but suddenly there is for the very first time there is a drop. There was a drop here, minor drop, 500 CRs. All right, there was again a drop. यहाँ पे ठीक है, but from September let's see कि 17,108 हुआ था उसके पहले सितंबर में, and then December did higher. Again September में इधर हुआ था, December did a bit lower, not an issue. यहाँ पे हुआ, this is the marginal difference. यहाँ पे 500-600 करोड़ का नहीं, 1,000-1,200 करोड़ का difference currently यहाँ पे आ गया. That is nearly around
5% ऑफ डिफरेंस एज यू कैन सी. सो इट वॉजंट एक्सपेक्टेड बिकॉज जो प्रीवियस सीजन था ना दैट इज़ कॉल्ड लाइक फेस्टिव सीजन. ठीक है, तो उस पर ज़्यादा सेल्स होने चाहिए, ज़्यादा कुछ होना चाहिए, स्टॉकिंग होता है लोग का कि दे स्टॉक देयर प्रोडक्ट्स एंड दिस एंड दैट, बट इट्स फाइन. सो दैट वॉज हैपनिंग. दिस इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ओके, एंड इनका अदर इनकम से ज़्यादा आया है, बट अदर इनकम वी डोंट काउंट. मोस्टली ना हम लोग सेल्स देखते हैं ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ही फोकस करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग इन टू द ईयरली फिगर्स, बट मेनली आप अगर रीज़न देखो इसके ड्रॉप का, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि इसका ख़राब क्वार्टरली रिजल्ट आया. ओके, एंड देर इज़ ए यूजुअल सेल ऑफ इन द मार्केट दैट इज़ गोइंग ऑन. अभी सेल ऑफ हो ही रहा है. FIIs आर बुकिंग प्रॉफिट as we all know. I have discussed this thing also in the previous the thing that I did previous live stream. ठीक है, अब थोड़ा पैटर्न समझते हैं कि क्या हर साल दिसंबर में इट फॉल्स. ओके, लेट्स सी. मार्च 2022 इट वाज राइजिंग. ठीक है, नवंबर में, दिसंबर में इट फेल. ठीक है, जनवरी से फरवरी से इट स्टार्टेड टू बूस्ट अप. फरवरी से अच्छा बूस्ट हुआ. ठीक है, कुछ हो सकता है, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. नाउ आफ्टर दैट लेट्स सी. अगेन इन द जनवरी 2024 देर वॉज अ ड्रॉप. ठीक है, मतलब जनवरी फरवरी में इट मोस्टली फेल्स, एंड फरवरी के बाद इन मार्च इट स्टार्ट्स टू गो अप. जून में इट्स ऑलवेज बुलिश. यू कैन सी हेयर ऑल्सो जून में इट्स बुलिश, हेयर ऑल्सो जून में इट्स बुलिश. ठीक है, यहाँ पे भी आते आते जून में बुलिश, मतलब इसी का बात कर रहे थे. सो करेंटली दिसंबर फरवरी इट इज़ गोइंग डाउन. सो फॉर ऑन मार्च यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ थोड़ा ऊपर जाएगा ना. अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल गो बुलिश टिल जून एंड जुलाई. वहाँ तक फिर से अगेन इट विल गेट बुलिश. क्योंकि क्यों होता होगा, क्योंकि प्रॉबेबली इसका रिजल्ट अच्छा आता होगा. उस वक्त में मार्च 2022 में इट वाज 16,500 CR. यहाँ पे ये 18,500 करोड़ हो गया. फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. सो देर इज़ अ नॉट पैटर्न उतना तो फॉर्म नहीं हो रहा, बट येस दिस इज़ द मेन रीज़न. एंड दिस इज़ द वेबसाइट कॉल्ड इज़ screener.in. ठीक है, तो आप अपने लेवल पे भी इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो, बिकॉज आई एम हेयर टू टीच. मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा, तो आपको जिससे एक आइडिया हो जाएगा दैट हाउ टू एनालाइज स्टॉक, सो यू डोंट पैनिक. आई होप दैट सॉल्व योर प्रॉब्लम. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट इफ एनी वन हैज़ एनी अदर स्टॉक दैट दे वांट मी टू रिव्यू, या मैं उनके बारे में बताऊं, तो आप उनको लिख सकते हो चैट पे, एंड आई विल जस्ट रिव्यू देम, नॉट एन इशू. ऑलराइट, थैंक्स. So yeah, this was the chart of ITC. Pretty steep drop, but it's fine though. It will recover. Nothing much to worry about. It's a strong, fundamentally and technically strong stock, so nothing much to worry about. Now Zomato. ठीक है, अब Zomato की बात करें. Zomato is one of my favorite stock. I picked it up when I saw a change in trend. ठीक है, बहुत लोग बोलते होंगे कि ये वो सब मैंने भी देखा, मैंने भी करा. NTPC green. Okay, I'll just see that after Zomato. ठीक है, बट जोमेटो के साथ चेंज इन ट्रेंड क्या हुआ था ना. आई विल टेल यू वाई फंडामेंटल स्टॉक्स आर अ बेटर वे टू पिक द स्टॉक्स. आई विल टेल यू वाई. बिकॉज इफ़ यू सी आई विल जस्ट सर्च जोमेटो राइट हियर. ठीक है, लोग बाद में बोलेंगे, बट बाय दिस वे, ठीक है, यू कैन ईजिली एंड बिफोर एनी वन एल्स यू कैन ईजिली गेट इन टू अ स्टॉक. मैंने ऐसे जोमेटो पकड़ा है, मैंने ऐसे मिर्ज़ा इंट पकड़ा है. दो स्टॉक्स दैट गिव मी लाइक मल्टी फोल्ड रिटर्न कोविड टाइम के बाद में. So this is the way you can do it as well. So I'll just show you once. Yeah, see here. आप यहाँ पे देख रहे हो कि Zomato, I don't precisely remember कि Zomato कब लिस्ट हुआ था. If anyone does, then please write it on the chat. But I don't exactly remember that Zomato कब लिस्ट हुआ था स्टॉक पे. But as far as I remember, it was 2020 or 21 only. To 2021 में the loss was -489. Then the loss was -450. Then it was 3 CR. Then it was 312, 200. Then there was a significant drop. ठीक है, मुझे लगा कि अच्छा ठीक है. Again they managed to like maintain that. 48 CR minus में थे, the sales were increasing and they managed to maintain that. So this strike like a bulb in me. ठीक है, कि हो सकता है कि यहाँ से कुछ चेंज इन ट्रेंड हो रहा हो. मे बी द लॉस विल शॉर्टन, क्योंकि यहाँ से यहाँ में बहुत मेजर एक चेंज आया था. ठीक है, सो इफ़ वी विल सी कि हाँ कहाँ गया, सितंबर में आई सॉ कि हाँ चेंज आया. सितंबर अक्टूबर में कभी तो इनका रिजल्ट आया होगा. तो इफ़ यू सी सितंबर अक्टूबर नियरली कहाँ गया, हाँ, तो दे वर अराउंड 100. ठीक है, अब कुछ अर्ली कैचेस होंगे जिन्होंने इसके बाद इसमें ही बाय कर लिया होगा. ठीक है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक अगर किसी क्वार्टर में किसी का अच्छा सेल हो गया है तो वो अगले क्वार्टर में भी दे नीड टू मेंटेन दैट.
हो सकता है अभी ये यहाँ पे 100 चला जाता तो आई वुड हैव बुक माई लॉस, सो आई वेटेड फॉर 1 more quarter। तो 1 more quarter वेट करने के चक्कर में आई बॉट इट क्वाइट एक्सपेंसिव, मैंने 100 के अराउंड में बाय करा था, एंड देन आई अल्टीमेटली सोल्ड इट समवेयर अराउंड 200 लेवल्स, 200 के आसपास में मैंने सोल्ड करा था, क्योंकि दिस यू कैन सी कि यहाँ पे 200 गया, आई डिडंट बुक माई प्रॉफिट बैक देन। उसके बाद इट सफर्ड अ लॉट ऑफ टाइम, ये आपको भले छोटा मार्क दिख रहा हो बट इट इज़ फ्रॉम May to June July, okay, a lot of time. So I booked somewhere, I booked my profit around 200 levels and I exited that stock. So this was the story of Zomato. So this is how you can gain a crisp understanding of the stock. ठीक है, चलिए अब NTPC ग्रीन देख लेते हैं एक बार। Let's see NTPC green. It's a good stock, I guess. Nothing much to worry about. Energy stock, okay, might be okay. Surprisingly, it's in negative today, even though most of the energy stocks performed really well for the day. It's in the bearish mode after the IPO. I remember the IPO. So IPO के बाद it is in the fairly sorry, there was a voice glitch. There is a fairly bearish move में ही चल रहा है, but you can see is it's revolving around the resistance. ठीक है, काफ़ी टाइम से ये रेजिस्टेंस के आसपास घूम रहा है, इवन दो इट इज़ इन अ लाइक बियरिश डाउन ट्रेंड। ठीक है, बियरिश है अभी स्टॉक काफ़ी समय से, 2024 के दिसंबर से ही ये बियरिश है, बट इट इज़ नियर द रेजिस्टेंस राइट नाउ। सो नियर द रेजिस्टेंस से मतलब क्या हुआ कि अभी जो है इसका इट कैन बी बुलिश फ्रॉम हियर। ठीक है, मोस्टली व्हेन देयर इज अ बेयरिश मूव जब आता है, व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट बेयरिश मूव सराउंडिंग, ठीक है, तब क्या हो जाता है कि स्टॉक कोई सा भी हो, कितना भी अच्छा हो, चाहे वो फंडामेंटली स्ट्रांग हो या ना हो, दे स्टार्ट टू फॉल। ठीक है, बट NTPC ग्रीन इज समथिंग दैट is a good stock, has a good backing, good reliability with the stock connects with. ठीक है, तो it is a decent stock to hold for. Now let's just analyze कि इनका fundamental क्या है, so it will give us a broader idea of the topic. Sorry, NTPC Green Energy, all right. Okay, it's a fairly new company. It was incorporated in April 2022 itself, as you can see, undertaking projects of organic and inorganic routes. Okay, total renewable capacity is 26,000 megawatts. Okay, offtake NGL agreement 17 of times. Okay, solar energy पे ही mainly है ये, इनका 91% है. Are they the leader? I am not sure if they are the leader or not. We'll just see. NGL also okay. India Oil, NTPC, okay. This is the structure of the company. No, they are not the bigger player. There are few more bigger players, like Adani Green is the one of the bigger player. ठीक है, Tata Power is not much into this green energy thing, so yeah. So there is just one bigger player. The company is fairly profitable, not an issue, increasing profits. ठीक है, sales are good, tentative sales are also good. The borrowings, okay, the borrowings are quite alarming. ठीक है, borrowings are quite alarming. It's 88,000 crore company, but the borrowings are nearly 18,000 CR. It's okay, it's understandable, it's a government company, it's okay, not an issue. Reserves are increasing, profit is good, but the borrowing is quite alarming, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. Probably इनको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला होगा जिसको करने के लिए इनके पास पैसे नहीं होंगे, इस वजह से इन्होंने बोरोइंग्स ले रखे हैं. ओके, डेटर डेज हैव इंक्रीज. डेटर डेज मतलब जो ये बोरोइंग्स लेते हैं वो ये कितने दिन में चुकाते हैं, दैट इज़ डेटर डेज. ठीक है, प्रमोटर स्टेक इज़ प्रीटी मच हाई, एज यू कैन सी. FIS स्टेक इज़ गुड. इस पर अभी कुछ खास डेटा नहीं है क्योंकि बस 3 ही महीने हुए हैं इस स्टॉक को लिस्ट हुए, 3 महीने भी ढंग से नहीं हुए होंगे इनफैक्ट, सो दैट माइट बी द थिंग. तो इट्स अ अर्ली स्टेज IPO इज़ व्हाट आई वुड से. ठीक है, तो इस IPO के गेन का अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है. So if you are holding this, can you please mention the price if you are still watching, at which price you have bought it, or like were you planning to buy it? If you are still watching, then it would be great. Otherwise you can come back later and just mention the price in the comment and I'll just drop in the group as well. KNTPC Green का क्या था? Buying price was 130.
130, where it is 130, okay. Yeah, not an issue. 130 is okay. It will see just for once if this breaks now, it's gonna give a decent multifold return from here because the company's fundamentals are good. Just the borrowings are quite alarming. I'll have to check the news and stuff that why the borrowing is so high. Apart from that, it's quite good. Nothing much to worry about. If you are holding at 130, you can hold. If you are not in the rush to like square off the trades, just you can simply hold it. Nothing much to worry about. Okay. Vare Energies is also a good stock to be noticed. Let's see the 1 day time frame in this. Okay, Vare Energy, you can see also it is following the similar pattern. कितना ज़्यादा hype था इस Vare Energy को लेके, because one of the parent companies of Vare Energy, it's fine with you. So one of the parent companies of Vare Energy gave like multi-fold return and stuff. It was quite a hyped stock and stuff. It is following a similar pattern. ठीक है, ये भी resistance के पास है. एंड इस पे IPO पे प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, यू कैन सी फेयरली. एंड इसके बाद में थोड़ा लंबा डाउन ट्रेंड चल रहा है, बट इट्स फाइन. लेट्स सी वारे एनर्जी का भी थोड़ा देखते हैं. आई एम नॉट श्योर अबाउट देयर WA वेयर वारे एनर्जीज. या सो वारे एनर्जीज फंडामेंटल्स. Okay, so is it a bigger or smaller company? It's a smaller company than NTPC Green. ठीक है. And let's see how much capacity do they have, if they have mentioned it. इनका सोलर पावर से, सोलर PV मॉड्यूल से इतना आता है. their export sales is higher. Okay, international business 1.6 gigawatt solar power module manufacturing unit. Okay, it will be okay. all right. ठीक है. Not much of an information about the total capacity, but it's fine. We will see if the PPT is available. Yes, PPT is available. They might have mentioned it here. PPT देख लेते हैं because let's see. क्योंकि जब मैंने मिर्जा कैच करा था, which is the best website to analyze and sync it. See, for fundamental analysis, I don't think there is any better website than Screener.in that I am currently like analyzing this on. Apart from that, for technical analysis, there is a website called Charting that has multiple factors. कि बहुत सारे factors है उस पर आप देख सकते हो. and there is a thing कि हाँ उस पर है candlestick के भी charts पे है, like bullish engulfing बन रहा है, bearish engulfing बन रहा है. There is a star pattern, there is a hanging man pattern, there is doji, that dragonfly. Anything you ask for, they have it for technical analysis. And for fundamental analysis, I believe that Screener.in is the best one. There are few more paid websites that does do a better job, but for currently for personal financing and for finding like swing trades, I believe that these two are the best ones. Let's see if they have mentioned their overall capacity. Okay. या नियरली दिस ओनली वॉज, इतना ही लगभग उसका भी था. बट वारे एनर्जी इज़ अ एक्सपेंसिव स्टॉक, थोड़ा एक्सपेंसिव चला जाता है, सो दैट्स वाई थोड़ा सा तो प्रॉब्लमेटिक है. बट देयर ग्रोथ इज़ सिग्निफिकेंट एज कम्पेयर टू देम, एज कम्पेयर टू NTPC Green, I would say. इनका सेल्स इज़ लाइक समवेयर अराउंड 376 एंड द सेल्स आर 3,500 करोड़. एक बार NTPC ग्रीन का फिर से हम लोग देख लेते हैं. NTPC ग्रीन, इनका कितना सेल्स हो रहा है. ओके, द सेल्स आर प्रिटी मच लेस. ठीक है, द सेल्स आर प्रिटी मच लेस. सो देयर इज जस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट. ओके, सो दिस मीन्स कि इनका PPT है क्या? नहीं, इनका PPT नहीं है. ओके, सो दिस मीन्स इफ दे मैनेज टू गेट अप टू द सेल्स ऑफ वारे एनर्जी, they will probably be making more profit. ठीक है, इनका तो सेल्स काफ़ी कम है अभी. ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ दिस मच, अदर इनकम इज़ दिस, इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन में ओके दे आर पेइंग सिग्निफिकेंटली. प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज़ 99 एंड स्टफ. तो 500 करोड़ पे अगर 99 का इनका प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, मतलब कि नियरली आप पकड़ लो 20% प्रॉफिट पे है ये लोग. सो लेट्स जस्ट सी वारे एनर्जीज अगेन.
हाउ मच प्रॉफिट आर दे इन, दे आर क्वाइट लेस देन 20%. इनका एक्सपेंसेस में क्या है, इनका मटेरियल कॉस्ट भी है क्या? हाँ, मटेरियल कॉस्ट ऑल्सो देर, दैट इज़ सिग्निफिकेंट. इनका एम्प्लॉय कॉस्ट काफ़ी कम है, एज सेम एज नियरली सेम पैटर्न एज जैसा उनका था, NTPC ग्रीन का था. Vane Energy, I believe, is a better fundamental stock as of now, till the time NTPC green catches up. ठीक है, जब तक NTPC green catch up कर रहा है तब तक Vane Energy is good thing. We will also see, एक बार अदानी ग्रीन भी देख लेते हैं जब हम लोग एनर्जी स्टॉक्स एनालाइज कर ही रहे हैं अच्छे से. तो विल जस्ट सी अदानी ग्रीन एज वेल कि इनका क्या कहानी चल रहा है. ऐसे तो किसी भी अदानी के स्टॉक का बहुत ख़राब ही हाल है अभी फ़िलहाल. यू कैन सी September 2000 it was like 2000 रुपीज़ स्टॉक एंड हैज़ फॉलन डाउन टू मोर देन हाफ. तो ऐसा सीन है. इनका सेल्स इज़ लोअर देन वार एनर्जीज. ओके, प्रॉफिट इज़ गुड. प्रॉफिट इज़ गुड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देवर मेकिंग 500 CR. ठीक है, वार एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं. वो 3,500 करोड़ पे 500 CR का प्रॉफिट बता रहे थे. इनका 3,000 करोड़ पे 500 CR का प्रॉफिट आ रहा है, जहाँ पे 500 CR का मार्जिनल डिफरेंस है. 500 CR इज़ अ गुड मार्जिनल डिफरेंस. इनका मटेरियल कॉस्ट ज़ीरो कैसे है? They didn't got any new order और क्या इनका रजिस्टर. Okay, there is not much information about the expenses to be exact, but let's see their PPT if it is available. Yeah, PPT से थोड़ा better understanding होगा कि इनका कहानी क्या चल रहा है. if their expenses are so low और कि क्या बातें हैं इनके. Okay, they have 3x growth. Are they showing year on year data or it is quarter on quarter data? Quarter on quarter तो नहीं होगा. It most probably be year on year data only. Okay, long term debt. Their debt are from PSU banks ना, private banks. Bonds से भी काफ़ी ज़्यादा debts हैं. Okay, okay. कंपनी भागने वाली तो नहीं लगती है, but it's okay. Indian power demand going faster than historically. Okay, that is the another thing. Power capacity, robust growth needed. Total installed power capacity. Okay, that is projected. That means that is projected to increase by 10.6% for them. इनके लिए personally it is that much is projected. Okay. Charging, discharging. Okay, faster file storage. Okay, what are these ESG ratings इन्होंने दिखाया है. All right. India's leading energy transition. Okay. Finances पे आते हैं ज़रा. Supply capacity, run rate. All right, reducing symmetric risk. Okay. Business strategy. ठीक है. Expertise in developing mega scale renewable energy products. Okay, they are building some of them. Or it is complete. Okay, no, it is complete. It is completed. Energy products की बात कर रहे हैं. Okay. ये 500 मेगावाट तक इंक्रीज़ कर देंगे इसको बाय 2027 एंड देन मोर देन 500 गीगावाट्स बाय 2030. ऑल राइट. ऑपरेशनल एक्सीलेंस ये वो सब दिखाया है इन्होंने. फाइनेंशियल्स पे कब आएंगे ये? दैट इज़ देयर दिस. या नो, दिस इज़ द ऑपरेटिंग कैपेसिटी. ओके. EBITDA फ्रॉम पावर सप्लाई. ओके, दिस हैज़ डिक्रीज्ड अ बिट. Revenue from power supply has also decreased. थोड़ा ख़राब हाल है यहाँ पे फ़िलहाल. And ये we are comparing it with this NTPC Green and Vare Energies. So I believe that NTPC Green and Vare's Energies are better for investment rather than Adani Green as per current fundamentals. This is what I believe. ठीक है. Apart from this, is there any other stock that you guys want me to analyze? Bikaji is a stock that I really like and I have made some money on. I would not say it has been a multi-bagger or something for me, but it was good. So yes, this is the okay. If it breaks this, I might buy. काफ़ी steep correction हुआ है.
इट माइट गो टिल हेयर, क्योंकि ना जब भी आप देखो कि इवन दो इट स्टार्टेड टू फॉल टिल हेयर, इसने करेक्टली यहाँ तक गया है, यहाँ से भी ऑलमोस्ट गया ही वो, फिर इधर तक आया, देन अगेन इट वेंट अप, सो इट्स नाइस। इसका करंट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होगा, these are the times when it went really bearish. So for really bearish times we will just mark another one here, ठीक है। Now this is what happened to BKG. There is shows that profit slumped. Okay, we'll just see how the profit slumped. BKG, sorry, BIKAJI. All right, so decent volume pump as well. As you can see, the volume is pretty much good. Sudden बहुत ज़्यादा ही volume आ गया, because the usual volume is to stay around 1 lakh, 4 lakh, 3 lakh, 5 lakh, 7 lakh, 2 lakh, 7. But suddenly there is a lot of volume. That means a big player has entered. It might be FII or DII, because इतना ज़्यादा volume तभी आता है. Now it might show a lot of people might also book their profits, significant profits here. हो सकता है उसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग प्रॉफिट्स ये वाला बुक भी कर लें. ओके, सो प्रिटी मच वेरी गुड प्रॉफिट, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में इंक्रीज़ है. सेल्स में भी बहुत अच्छा इंक्रीज़ है इनका, ईयर ऑन ईयर वी वर टॉकिंग अबाउट. नाउ लेट्स जस्ट सी देयर क्वार्टरली रिपोर्ट. क्वार्टरली रिपोर्ट में भी देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट राइज, देयर वाज अ ड्रॉप हेयर, ठीक है. तो क्या हर सितंबर से दिसंबर में, सो आई एम सीइंग अ पैटर्न हेयर काइंड ऑफ, कि हर FMCG स्टॉक में, जितने भी हम लोग ने FMCG देखे, 2 ही देखे हैं इनफैक्ट, ITC में, BKG में. ITC is a broader range of that. We'll also check Hindustan Unilever to get a better understanding कि क्या सब में ही सितंबर से दिसंबर में एक ड्रॉप आता है, एंड व्हाई इज दैट सो, बिकॉज दिस इज द फेस्टिव सीजन. प्रॉबली द रीज़न आई थिंक क्या होता होगा कि फेस्टिव सीजन से पहले इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है, क्योंकि आप देखो कि सितंबर में हर बार ज़्यादा है. यहाँ पे जून में 414 था, सितंबर में इट्स 570. यहाँ पे जून में 478 था, सितंबर में इट्स 598. Again there was September में 713 and there is again a drop. So the reason I think is कि क्या होता होगा यहाँ पे, that these suppliers, because see these are the products that don't sell directly ना, so they are dependent on the distributors, suppliers, इन पे dependent रहते हैं, wholesalers ये सब पे. तो इनसे from factory the product goes to the distributors. तो distributors पे जाने के बाद, so distributors क्या करते होंगे कि वो जून से सितंबर के बीच में दे माइट हैव पाइल्ड अप ऑन द प्रोडक्ट्स, ठीक है, सारे वो लेके रख लेते होंगे, बिकॉज दे नो दैट द फेस्टिव सीजन्स आर कमिंग, एंड देन दे स्टार्ट टू लाइक सेल इट, ठीक है. इसी वजह से मे बी सितंबर से दिसंबर में एक ड्रॉप होता होगा. दिस इज व्हाट आई बिलीव, ठीक है. दैट्स व्हाई देयर इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप एंड दैट्स व्हाई दिस हैपेंस. लेट्स सी हिंदुस्तान यूनिलीवर. हिंदुस्तान यूनिलीवर का ज़्यादा तो ऐसे दे डोंट हैव दिस, उसको क्या बोलते हैं, लाइक ब्रॉडर फूड रेंज आई वुड से, बट इनका भी प्रॉफिट डाउन जाना चाहिए इफ़ दे आर फॉलोइंग द सेम पाथ. इट्स अ मच बिगर कंपनी, बट सितंबर में बहुत थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बट देर इज़ चेंज. सो मे बी दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज सी दिस द सेम थिंग हैपन्स विथ द TV एंड AC. अगर मैं वोल्टास की बात करूँ, Voltas turns bearish at this time, sorry bullish at this time mostly. Yeah, see it is usually bullish at this time, क्योंकि अब क्या होता है ना कि अब फरवरी आ रहा है, अब इनका bullish term शुरू होगा. Now the sales will start to rocket and now the things will change. I'll show you the pattern. आप देखो यहाँ पे दिसंबर तक the sales are low, मार्च में it skyrockets, great sales, okay sales. फिर यहाँ पे प्रॉफिट कहीं ना कहीं कम होने लगता है क्योंकि इनको स्टोर करना है, दिस एंड दैट. फिर अगेन मार्च में हायर सेल्स, जून में हायर सेल्स, फिर सितंबर में कम, दिसंबर में कम. सो सेम काइंड ऑफ पैटर्न फॉलोज देयर एज वेल इज व्हाट आई बिलीव, ठीक है. सो या FMCG, वी गॉट टू लर्न वन मोर थिंग अबाउट द FMCG फॉर दिस टाइम. आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस स्ट्रीम. विल कीप इट टिल here only today. I know I mentioned that I'll also analyze strategies, but we will do it on the weekend with the help of ChatGPT and other things. Usse now backtesting has become easier. I'll show you guys how to backtest the strategies and
how much further we can take it. So thank you all for joining. I hope you have a nice day and a profitable life ahead. Thank you all so much. I'll just stop